Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English notebook and your Wordsworth English Reader book. Turn to page number 87 as I'll be continuing with lesson 9, The Priceless Slippers. Now students, today first of all, I'm going to read the lesson and then I'm going to explain the last page of the lesson which was left. Fine. In my last video, I had explained till the first two paragraphs of page 90, and today I'm going to explain the rest of the chapter. So first of all, I'm going to read this lesson. Please listen to me carefully. Page number 87, lesson 9, The Priceless Slippers. In a little village, there lived a poor man who was so tired of being poor that his sole aim in life was to become rich and have a lot of money. In his desperation, he had tried many means of making money, but he didn't get any satisfactory results. Then one day, someone told him of a great Sufi saint, Hazrat Nizamuddin Aulia, who lived in Delhi. The poor man was told that the saint was a very kind man with extremely wealthy followers. Surely, he will give me enough money to start a new business, and then I will be a rich man, thought the villager to himself. The very next day, he set off for Delhi, where the Sufi saint stayed. He had to walk all the way as he could not afford to travel on horseback. Tired and hungry, the poor man arrived at the home of the saint at last. The Sufi greeted him kindly, and one of his followers guided him to where he could wash himself and brought him food to eat. After taking some rest, the villager told the Sufi the purpose of his visit. Why is it so important for you to have money? The Sufi asked. The villager recounted his woes. I don't have enough money to even eat or clothe myself. If I have a lot of money, I will never have to worry about the things. I will be happy. You are welcome to stay here for as long as you want. You will never be hungry here and will always be decently attired, the Sufi assured him. But the villager was adamant. He wanted money. For him, that was the only solution to his problems. He wanted to continue living in his village, start a business, and live in a comfortable house. The Sufi asked him, Why did you come to me? I am not a rich man, but there are many rich men in Delhi from whom you may go and ask for money. The man said that he had thought of that, but knew from experience that the rich were never eager to part with their wealth. I had heard that you never turn your back on anyone, so I came to you. The Sufi slowly nodded his head, but said nothing. He remained busy the rest of the day. There were prayers to be said, visitors to be met, and students to be taught. He continued his normal routine. The villager waited patiently for the Sufi to summon him and give him money or ask one of his wealthy friends to give him some. 2 days passed and he was getting impatient. On the third morning, he realized that his trip to Delhi was not going to bear fruit and it was time for him to leave for his village. He had been taken care of very well. He had not been hungry
nor had he slept so comfortably in a long time, but money was not given to him. Feeling disappointed, he went to say farewell to the Sufi. Are you leaving? But I can't let you go empty-handed. The villager hopes were raised. The Sufi took off his worn-out slippers and gave them to the villager, saying, You have a long and dusty journey ahead of you. These slippers may be useful. I only own what I wear, so I will give you these with my blessings. The villager was shocked, but did not show his surprise, as he respected the saint and did not want to insult him. The world talks of Hazrat Nizamuddin Aulia, but in reality, he is as poor as me, thought the villager to himself. He then left Delhi with the pair of slippers in his bundle. He was afraid that the people of his village would laugh at him when they would see or hear of the gift that the saint had given him. As the villager was walking in the hot sun, he saw a great cloud of dust coming towards him. As he watched, he saw a magnificent horse galloping towards him. An equally magnificent rider was seated on the horse. The horse and the horseman drew nearer and stopped in front of the villager. The striking horseman got off the horse and pointing to the bundle said, You lucky men, are you coming from the great saint with a priceless gift? The poor man stammered that it was indeed a gift that the saint had given him, but it was far from priceless. He wondered aloud how the stranger knew that the villager had been to meet the saint. I recognize the sweet fragrance of my lord from the bundle that you carry. He introduced himself as Amir Khusro. The villager showed him the pair of slippers, and to his surprise, Amir Khusro picked them up reverently and held them to his head. Be kind and give me these slippers for a bag of gold that I have earned for 6 months of work for the emperor. You can also have my horse and my robes. The villager was astounded, but he readily agreed to part with the slippers for the unequal amount. Both men were delighted with their exchange. Each thought that he had gained the greatest treasure. Amir Khusro left for Delhi, and the poor villager returned a rich man. Never again in his life did he have to worry about his food or clothing, and he lived happily. Needless to say, he became a devout follower of the Sufi, whose humility he could never forget. Later, the poor villager came to know that Amir Khusro was a great musician and poet, as well as the most famous disciple of Hazrat Nizamuddin Aulia. He wrote in Persian, Arabic and Hindi. He is considered to be the inventor of the tabla and the Hindi language. He was buried near the tomb of Hazrat Nizamuddin Aulia in Delhi. So students, this was the reading, and now I'm going to start with the explanation of the lesson. Now in a little village, students, there lived a poor villager who was very poor. He was so tired of being poor that his sole aim in life was to become a rich man. बेटा एक विलेजर था, वो इतना गरीब था कि लाइफ में बस उसका एक ही एम था कि कुछ भी करके उसको रिच बनना था, है ना. He was so poor that he couldn't afford food and clothes for himself. And it was not that he had not tried for making or earning money. He had tried, but he failed all attempts. And then one day, someone told him about Hazrat Nizamuddin Aulia, a Sufi saint. The villager, when he came to know about the Sufi saint, he was
thinking a lot, है ना. And he was also told that the Sufi fulfills all the wish a person desire, है ना. उसको बोला गया कि सूफी जो है सबकी इच्छा पूरी करता and कभी भी सूफी के वहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है ना. And the Sufi had extremely wealthy followers, and सूफी के जो फॉलोअर्स थे, जो सूफी को मानते थे, वो बहुत रिच लोग थे. So the villager thought that if he goes and meets the Sufi will give him money, because he just wanted money and become rich. So he thought that the Sufi will give him money, and with that money he'll start a business and he will become a rich man. That's what he thought. Then the very next day he started his journey from his village to Delhi, and he was so poor that he couldn't even afford a horse. We are talking about the 13th century. That time science was not developed. We didn't have vehicles. We didn't have car, bikes, trains, buses. And if people used to travel, they used to travel either on foot and or by horse, elephants, camel. इनको ride करके जाते थे. But this poor villager, he was so poor that he didn't even have a horse कि वो ride करके जाए. He had to walk all the way to Delhi from his village. So he started his journey. And finally, tired and hungry. He was hungry because he couldn't afford food. So finally, after walking, after covering a long journey, he managed to reach the Sufi's home. And he reached the Sufi's home. When he reached there, the Sufi, he greeted him. Sufi ने उसका बहुत अच्छे से welcome किया, है ना. Then a follower of Sufi, he came, he guided the villager to a place where the villager could wash himself and freshen up. Then he was given food to eat. He was very hungry. Now after taking some rest, the villager, he met the Sufi and told him the purpose of his visit, है ना. थोड़ा आराम करने के बाद villager ने Sufi को अपना purpose बताया, that why he came to Delhi to meet the Sufi, because his sole aim was to have money from the Sufi, and with that money he can lead a comfortable life. And then the Sufi asked him that why is it so important for you to have the money. So the villager, he recounted all his woes. Villagers ने अपनी सारी बीती हुई problems बताई कि मेरे पास I don't have money, तो मेरे पास खाने को भी नहीं है and पहनने को भी नहीं है. I can't even afford clothes and food for myself. And if I have money, I will never have to worry about these things and I can lead a comfortable life in future. So what did the Sufi tell him? The villager told him that if you give me money, I'll be very happy and I'll be rest assured for my rest of the life. The Sufi told him that you're welcome to stay here for as long as you want. Sufi ने बोला तुम्हारा जितना मन करे तुम उतने दिन मेरे यहाँ रुक सकते हो. And I promise you that till the time you stay with me, you will always be given food to eat and you will be dressed properly. है ना. आपको खाने को भी मिल जाएगा, क्योंकि आपकी मेन प्रॉब्लम तो यही है कि आपके पास मनी नहीं है, जिससे कि आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आप खाना नहीं अफोर्ड कर सकते. आई प्रॉमिस यू कि till the time you want to stay here, you can stay here and you'll get food to eat and you will be nicely, decently dressed. आपको पहनने को अच्छे कपड़े भी मिल जाएंगे. But the villager, he was adamant. Villager तो ठान क्या थे, he was determined कि नहीं, I just want money, है ना. I want the money and with that money I'll return back to my village and in the village I'll start a business and lead a comfortable life after earning money from the business. He didn't want to stay with the Sufi. He was adamant. So then the Sufi asked him that why did you come to me? I'm not a rich man. Sufi ने बोला, if you think that I'm a rich man, I'm not a rich man, है ना. But there are many rich persons living in Delhi and you can always go to them and ask money from them. Then what did the villager says? That villager says that from my past experience, कि मेरा जो experience है वो कहता है कि जिनके पास जितना पैसा होता है वो अपना पैसा किसी से भी शेयर नहीं करते, वो किसी को भी अपना कोई भी सामान नहीं देते. So it is useless to go and ask money from other people in Delhi. The Sufi slowly nodded his head. When the Sufi he heard this, उन्होंने अपना जो सिर ऐसे नॉड किया, but he did not speak anything.
Then he went back to his routine. सूफी सेंट का रूटीन क्या था? उनको प्रेयर्स करनी थी, है ना. He had to meet the visitors. जो भी बाहर के लोग उनसे मिलने आए थे, उनसे सूफी को मिलना था. Then he had to teach the students. वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, उनको पढ़ाना था. And he continued with his normal routine without saying anything to the villager. Now the villager, he waited patiently for the Sufi to summon him and give him money or ask one of his wealthy friends to give him some. अब जो villager था वो तो बहुत बेसब्री से impatiently wait कर रहा था कि कभी ना कभी तो सूफी मुझे बुलाएंगे ही बुलाएंगे. Either he'll give me money or he'll ask one of his friends, wealthy, rich friends, to give me money. And with that money, I can be happy and lead a comfortable life. Now 2 days passed. अब विलेजर को सूफी के वहां पे रहते रहते कितने दिन हो गए थे बेटा? 2 days. Now he started getting impatient. अब उसका जो पेशेंस खत्म होने लगा. उसको अभी तक तो उसको ये था कि सूफी मुझे कभी ना कभी बुलाएंगे, बट 2 दिन बेटा पास हो गए and the Sufi did not call him. So he started getting impatient. वो बेसब्र होने लग गया. Now the 3rd morning he realized that it was time for him to leave for the village. अब उसको 3rd की मॉर्निंग में लगा कि मैं यहाँ तो बेकार में ही बैठा हुआ, मुझे अब अपने गांव जाना चाहिए. हाँ, एंड उसको लगा कि मैं जो सोच के आया था यहाँ पे कि I'll get money, मुझे ऐसा कोई सूफी जो है मुझे मनी वनी नहीं देने वाले. सो ही थॉट दैट इट्स बेटर कि मैं अब अपने विलेज जाऊं. बट देन ही थॉट कि जितने दिन में वो सूफी के यहाँ 2 दिन रहा, he had been taken care of very well. उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया. He had been given food to eat and then वो कभी भी इतनी कंफर्टेबली नहीं सोया था वो जितना 2 दिन सूफी के वहां आराम से सोया. He must have got a good comfortable cozy bed to sleep. But the only problem was that he had not been given money. Feeling disappointed, he went to say farewell to the Sufi. अब वो बहुत disappointed, sad हो गया था कि मुझे निराश हो गया था कि मुझे मनी तो मिलने वाला नहीं है. तो उसने बोला चलो मैं सूफी को farewell, bye bye करके आता हूँ, that I am going. Are you leaving? But I can't let you go empty-handed. Now when he went to say farewell, bye bye to the Sufi, what did the Sufi says कि अगर तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ तो जाने नहीं दे सकता. तो विलेजर्स होप फॉर रेस्ट. आप जो विलेजर थे उसकी तो उम्मीदें जाग गई थी, उसने तो होप सी छोड़ दी थी कि उसको मनी मिलेगा. नाउ ही थॉट कि मुझे तो सूफी कुछ ना कुछ अच्छा दे के विदा करेंगे, है ना, बाय बाय कहेंगे. नाउ व्हाट हैपेंड? The Sufi took out his worn-out slippers and gave them to the villagers, saying that you have a long and dusty journey ahead of you. These slippers may be useful, and I only own what I wear, so I give you these with my blessings. अब विलेजर ने तो सोचा था कि सूफी उसको अच्छा कुछ मनी वगैरह देगा, है, बट सूफी ने क्या दिया? सूफी ने अपनी वॉर्न आउट, घिसी हुई पुरानी स्लिपर्स, चप्पलें विलेजर्स को दी और ये कहा कि अभी आपके आगे बहुत लॉन्ग एंड डस्टी जर्नी है, अभी आपको बहुत पैदल चल के जाना है ना, क्योंकि कंक्रीट सड़क तो है नहीं, कच्चे रास्तों पे जाना है. उस समय सड़क वगैरह, रोड्स वगैरह कहाँ बनती थी, तो आपके आगे बहुत लॉन्ग और डस्टी जर्नी है. तो ये जो स्लिपर्स मेरी हैं ये आपके बहुत काम आएंगी, दे मे बी यूजफुल, एंड मैं ये स्लिपर्स को आप अपनी ब्लेसिंग्स के साथ दे रहा हूँ. और सूफी ने कहा कि मेरे पास वही है जो मैं पहनता हूँ, उसके अलावा मेरा अपना कुछ भी नहीं है. आई जस्ट ओन, मैं उन्हीं चीजों का मालिक हूँ जिसको मैं पहनता हूँ, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है. सो Sufi was wearing those slippers, so he took out his slippers and he gave them to the villagers, saying that I own only what I wear and I give these slippers to you with all my blessings. The villager was shocked. अब villager ने तो सोचा था कि he'll get money from the Sufi or he'll get something expensive from the Sufi, but उसको क्या मिला? Worn out slippers. But he did not say anything to the saint. उसको बहुत झटका लगा था, शॉक लगा था, बट उसने सूफी सेंट को कुछ भी नहीं बोला, बिकॉज ही रिस्पेक्टेड द सेंट, एंड कुछ भी बोल के वो सेंट की इंसल्ट, सेंट की बेइज्जती नहीं करना चाहता था. सो ही डिड नॉट अटर अ वर्ड एंड he thought, what did he thought? That the world talks of Hazrat Nizamuddin Aulia, but in reality he is as poor as me.
उस विलेजर ने सोचा कि सारे लोग कहते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया तो बहुत बड़े हैं, लेकिन वो तो मेरे जैसे गरीब इंसान है ना. ही डजंट हैव एनीथिंग बिकॉज सूफी टोल्ड हिम कैटेगरिकली कि मेरे पास, मैं उसी का मालिक हूं जो मैं पहनता हूं. सो देन he kept those slippers in his bag and then he left for Delhi with the pair of slippers in his bundle. And you can see in the picture, जो villager है उसके पीठ पे एक बैक पे एक बंडल है, उसने वो सूफी की स्लीपर्स अपने बंडल में रखी and then he started the journey for his village. And वो जब वॉक कर रहा था, ही वॉज थिंकिंग, ही वॉज वेरी स्कैर्ड कि लोग जब पूछेंगे कि तुम हजरत निजामुद्दीन औलिया से मिलने गए थे, उन्होंने तुम्हें क्या दिया. जब उन्हें पता लगेगा कि उन्होंने मुझे अपनी वर्न आउट घिसी पिटी स्लिपर्स दी, तो दे विल मेक फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे और मेरे ऊपर बहुत हंसेंगे. विलेजर यही सोचते सोचते जा रहा था कि पीपल विल लाफ एट मी, दे विल मेक फन ऑफ मी. और जब उनको पता चलेगा कि सूफी ने मुझे रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया, अपनी वर्न आउट स्लिपर्स दी. एंड ही वॉज जस्ट थिंकिंग एंड ही वॉज गोइंग. नाउ एज द विलेजर वॉज वॉकिंग इन द हॉट सन, he saw a great cloud of dust coming towards him. अब जैसे जैसे बेटा वो हॉट सन तेज धूप में वॉक कर रहा था, विलेजर को दूर एक डस्ट का क्लाउड, पूरा धूल भरा क्लाउड दूर से आता दिखा. As he watched, he saw a magnificent horse galloping towards him. और उसने देखा कि वो जो धूल, उसकी तरफ जो धूल का क्लाउड था, उस पे क्या था, एक मैग्निफिसेंट, बहुत शानदार हॉर्स था. और हॉर्स के ऊपर इक्वली मैग्निफिसेंट राइडर था. और वो उस हॉर्स के ऊपर बैठ के किसकी तरफ आ रहे थे, टुवर्ड्स द विलेजर. The horse and the horseman drew nearer and stopped in front of the villager. Horse और horseman villager के पास आए, आते गए, and they stopped in front of the villager. The striking horseman got off the horse and pointing to the bundle said, "You are a lucky man. Are you coming from the great saint with a priceless gift?" और आके उनके सामने वो घोड़ा और हॉर्स राइडर उसके ऊपर बैठा हुआ था, वो रुक गए. और वो मैग्निफिसेंट राइडर ने विलेजर से पूछा कि तुम तो बहुत ही लकी मैन हो, और तुम जो है एक ग्रेट सेंट के पास से आ रहे हो और तुम्हारे पास एक प्राइसलेस गिफ्ट है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइसलेस? प्राइसलेस का बेटा मतलब है कोई ऐसी चीज जो अनमोल हो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, विच इज वेरी वैल्यूबल, है ना, जिसकी कीमत कोई लगा ही नहीं सकता, समथिंग विच इज वेरी वैल्यूबल, है ना. तो हॉर्स राइडर ने क्या बोला कि तुम ग्रेट सेंट के पास आ रहे हो और तुम्हारे पास बहुत एक कीमती, बहुत वैल्यूबल एक गिफ्ट है. प्राइसलेस मीन्स समथिंग वेरी वैल्यूबल. The poor man stammered that it was indeed a gift that the saint had given him, but it was far from priceless. अब वो जो विलेजर था पुअर, वो तो एकदम सुन के वो तो अटक गया, उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं आ रहे थे. And he was thinking कि अरे मैं एक सेंट के पास से आ रहा हूँ, इसको कैसे पता, और जो मुझे जो गिफ्ट मिला है वो तो कोई प्राइसलेस है नहीं, वो तो एक वर्न आउट स्लीपर्स है ना, वो तो पेयर ऑफ वर्न आउट घिसी पिटी पुरानी चप्पल है, मेरे पास ऐसी कोई प्राइसलेस चीज नहीं है. सो विलेजर वो तो एकदम शॉक था, है ना, एंड आउट ऑफ नर्वसनेस उसके तो मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे. बट ही वॉज वंडरिंग कि इसको कैसे पता चला कि मैं सेंट के पास से आ रहा हूँ, है ना. ही वंडर्ड अलाउड हाउ द स्ट्रेंजर न्यू दैट द विलेजर हैड बीन टू मीट द सेंट. अब वो सोच रहा था कि इसको कैसे पता लगा हॉर्स राइडर को कि मैं सेंट से किससे मिलके आ रहा हूँ और मेरे पास कुछ है. I recognize the sweet fragrance of my lord from the bundle that you carry. He introduced himself as Amir Khusro. और तब उस मैग्निफिसेंट राइडर ने विलेजर को क्या बोला कि फ्रेग्रेंस मीन्स बेटा खुशबू, कि मैं जो है अपने जो लॉर्ड है, अपने जो मेरे भगवान है, उनकी जो मैं बहुत अच्छी खुशबू, है ना, जैसे फ्लावर्स की जो फ्रेग्रेंस है स्वीट होती है, इंसेंस की, अगरबत्ती की जो खुशबू है वो स्वीट होती है, परफ्यूम्स की खुशबू अच्छी लगती है ना सूंघने में, तो कह रहे कि मैं अपने लॉर्ड की जो स्वीट फ्रेग्रेंस है वो पहचानता हूँ. और ये तुम्हारे बंडल में से आ रही है. बंडल में ही उसने विलेजर ने पेयर ऑफ स्लिपर्स रखी थी.
और उस मैग्निफिसेंट राइडर ने अपने आप को किस नाम से इंट्रोड्यूस किया? एज अमीर खुसरो. The villager showed him the pair of slippers and to his surprise, Amir Khusro picked them up reverently and held them up to his head. तो विलेजर ने बंडल में से वो पेयर ऑफ स्लीपर्स जो सूफी सेंट ने अपनी ब्लेसिंग्स के संग दी थी वो दिखाई अमीर खुसरो को. हाँ, एंड अमीर खुसरो ने उन स्लीपर्स को उठाया और अपने माथे पे, सिर पे उनको बहुत सम्मान के साथ लगाया. बेटा हम भी मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान के पांव छूते हैं, है ना, या भगवान की कोई भी फूल या कुछ भी होता है उसको अपने सिर पे लगाते हैं. क्यों? बिकॉज हम अपना रिस्पेक्ट गॉड को शो करते हैं. तो उसी तरह से अमीर खुसरो ने जो सूफी सेन की जो वर्न आउट स्लीपर्स थी उनको सम्मान देके उसको अपने माथे पे लगाया, जैसे किसी भगवान की फोटो को या फूल को हम अपने सिर पे लगाते हैं. एंड बहुत सम्मान के साथ, be kind and give me these slippers for a bag of gold that I've earned for 6 months for the work of for the emperor. अब उसने बोला, अमीर खुसरो ने विलेजर को बोला कि बी काइंड, कि प्लीज मेरे ऊपर थोड़ा दया करो, एंड गिव मी दीज स्लीपर्स, ये जो स्लीपर्स हैं सेंट की ये मुझे दे दो, और इसके बदले में आई विल गिव यू अ बैग ऑफ गोल्ड, मैं तुम्हें एक बैग जिसमें पूरा गोल्ड भरा हुआ था जो अमीर खुसरो ने अर्न किया था एम्परर मतलब जो किंग है उसके वहां पे काम करके. तो अमीर खुसरो ने क्या ऑफर किया विलेजर को कि यू गिव मी दिस स्लीपर्स एंड इन एक्सचेंज ऑफ दिस स्लीपर्स आई गिव यू अ बैग ऑफ गोल्ड विच आई हैव अर्न फॉर द वर्क फ्रॉम द एम्परर फॉर 6 months. मैंने एम्परर के यहाँ 6 month काम करके इस बैग ऑफ गोल्ड को अर्न किया है, एंड आई कैन गिव यू दिस बैग ऑफ गोल्ड इन एक्सचेंज फॉर द slippers of my lord. You can also have my horse and my robes. और अमीर खुसरो ने भी बोला तुम इस बैग ऑफ गोल्ड के साथ मेरा हॉर्स, ये मेरा जो हॉर्स है ये भी ले लो, एंड ये जो रोब्स और ये मैंने बढ़िया सा जो कोट पहना है ये भी मैं तुमको दे दूंगा, बट प्लीज बी काइंड इनफ टू गिव मी द स्लीपर्स इन एक्सचेंज ऑफ what? In exchange of the bag of gold, the horse and the robes. The villager was astounded, but he readily agreed to part with the slippers for the unequal amount. अब जब विलेजर को जिसने सुना कि ये जो है अमीर खुसरो उन चप्पलों के बदले मुझे बैग ऑफ गोल्ड, हॉर्स और रोब्स देगा, तो ही वाज शॉक्ड, क्योंकि उसके लिए तो वो पुरानी चप्पल थी विलेजर के लिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, और वो सोच रहा था कि अरे उसके बदले में तो बाप ने मुझे इतनी चीज मिलेगी. सो ही रेडिली एग्रीड, वो तुरंत मान गया. ही रेडिली एग्रीड टू बी पार्ट, वो तुरंत जो स्लीपर्स हैं किसको देने के लिए तैयार हो गया? अमीर खुसरो को. नाउ बोथ मेन वर डिलाइटेड विद देयर एक्सचेंज. अब दोनों जो थे, दोनों लोग बहुत खुश थे, बिकॉज अमीर खुसरो ही गॉट द स्लीपर्स ऑफ हिज लॉर्ड, whereas the villager, he wanted money, he wanted to become a rich man, so he had got that bag of gold. Along with that bag of gold, he had got a magnificent horse and the good robes of Amir Khusro, है ना. तो दोनों को जो जो चाहिए था वो मिल गया. अमीर खुसरो got the slippers of his lord which were very valuable for him, which was like a treasure for him, whereas the villager, he wanted money, he got a bag of gold, and with that he got a magnificent horse and the robes of Amir Khusro. तो दोनों ही बहुत हैप्पी थे क्योंकि जिसको जो चाहिए था वो मिल गया था. Amir Khusro left for Delhi and the poor villager returned a rich man. Amir Khusro with that pair of slippers he left for Delhi, और जो poor villager था he returned a rich man. Now he had become a rich man because he had the bag of gold, he had got a magnificent horse, and he had got good robes. Never again in his life did he have to worry about his food or clothing, and he lived happily. And बेटा उसके बाद से कभी भी he had become rich, और उसको उसके बाद से कभी भी ना कभी क्लोथ्स के लिए सोचना पड़ा ना कभी खाने के लिए, because he had become a rich man and he could afford whatever he wanted. Needless to say, he became a devout follower of the Sufi whose humility he could never forget. अब बेटा ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि इसके बाद वो जो है वो विलेजर जो है सूफी का फॉलोअर बन गया था.
क्योंकि सूफी सेन ने इनडायरेक्टली उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी थी और उसको रिच बना दिया था। तो वो सूफी को एकदम सूफी का भक्त डिसाइपल बन गया था। और सूफी की जो ह्यूमिलिटी है कि सूफी इतना बड़े थे, उसके बाद भी उनमें जरा भी एरोगेंस नहीं था, उन कितने सिंपल थी, और उसके बाद से तो विलेजर उनका फॉलोअर बन गया। लेटर the poor villager came to know that Amir Khusro was a great musician and poet as well as the most famous disciple of Hazrat Nizamuddin Aulia। और बेटा काफी समय बाद विलेजर को यह भी पता लगा कि जो अमीर खुसरो है वो एक बहुत बड़े म्यूजिशियन, ग्रेट म्यूजिशियन, पोएट, ही वाज अ बहुत अच्छे पोएट भी थे, वो पोएम लिखते थे। एंड द मोस्ट एंड सबसे बड़े शिष्य थे, सबसे बड़े डिसाइपल थे किसके? हजरत निजामुद्दीन औलिया के। ही रोट इन पर्शियन, अरेबिक एंड हिंदी, और वो 3 लैंग्वेज अमीर खुसरो जानते थे। और वो किस किस लैंग्वेजेस में लिखते थे? पर्शियन, अरेबिक एंड हिंदी। एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी द इन्वेंटर ऑफ द तबला एंड द हिंदी लैंग्वेज। और ऐसा भी बेटा कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने ही तबला, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना तबला जिसको बजाते हैं, वो अमीर खुसरो ने ही इन्वेंट किया था। और इसके साथ हिंदी लैंग्वेज, जो हिंदी भाषा पढ़ते वो अमीर खुसरो ने ही इन्वेंट की थी। And he was buried near the tomb of Hazrat Nizamuddin Aulia in Delhi। और जब अमीर खुसरो की डेथ हुई तो बेटा उनको कहाँ पे बरी किया गया, कहाँ पे उनको दफनाया गया? जहाँ पे हजरत निजामुद्दीन औलिया, उनके गुरु थे जिनको वो मानते थे, उनकी टूम, उनकी कब्र के पास ही उनको दफनाया गया। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द लेसन, दिस वॉज द लेसन about a Sufi saint who lived in the 13th century and जो कितने बड़े थे उसके बाद भी वो एकदम सिंपल लाइफ जीते थे। फाइन। एंड उनको बहुत डिवाइन नॉलेज था। एंड द विलेजर, उन्होंने विलेजर को कुछ भी नहीं कहा लेकिन सारी इच्छाएं उसकी पूरी कर दी। सो आई होप स्टूडेंट्स you have understood this lesson, and now in the next video I'll be starting with the exercise of comprehension. So that's all for today students, but please do read this lesson again and again so that you understand easily when I start with the exercise. So that's all for today children. Thank you students. Have a good day ahead.